थोड़ा सा गेट खुला है ना प्लीज। भैया वहां से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए अपने लैपटॉप से। अच्छा, गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, ठीक है। तो इन लास्ट क्लास we discussed briefly about discrete random variable, and I told you expected value of x is sigma pi xi. Expected value of x square is sigma pi xi square, and from here we got variance of x is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. Any problem with that? Oops, it's going slightly out of the board. So, sorry for that. Expected value of x square minus expected value of x whole square. Any problem with that? No, sir. Okay. So today we are going to start with Bernoulli random variable. Obviously, this is so simple that probability of question coming from a Bernoulli random variable is almost zero, but still we'll go ahead with it. The whole idea is I have a random variable x which can take only two values, 0 or 1. Okay. So something may happen or may not happen, and the probabilities are probability of success is 1 and probability of failure is obviously 1 minus p, because total probabilities must add up to 1. Is it okay? Yes, sir. So expected value of x will turn out to be 0 into 1 minus p. Just a minute. It is sigma pi xi. So 1 minus p into 0 for this, and p into 1 for this. So basically expected values p. Okay. Suppose I am throwing a dice, एक पासा फेंका गया और 6 आना सक्सेस है और 6 ना आना फेलियर है. Getting a 6 is a success, not getting a 6 is a failure. So on an average, probability of getting a 0 is 5 by 6. Probability of getting a 1 is 1 by 6. Therefore, expected value of x is 1 by 6. On an average, एक थ्रो में 1 by 6 times या 100 थ्रो में 100 by 6 times मेरा 6 आएगा. Is it clear? Yes. Yes, sir. Now expected value of x square will be sigma pi xi square. So it will be 1 minus p into 0 square plus p into 1 square, which is again p, and therefore variance of x will be equal to expected value of x square minus expected value of x whole square, which is basically p minus p square, which is p 1 minus p. So if someone asks me what is the variance of the last experiment, मैंने एक पासा फेंका, I threw a dice, and if getting a 6 is a success and not getting a 6 is a failure, then variance is 1 by 6 into 5 by 6, and therefore standard deviation will be equal to under root of 5 by 36, which is root 5 by 6. Is it okay? Yes, sir. Okay. So that is how we can calculate standard deviation variance for a Bernoulli distribution. Obviously, it is such a simple concept that I have not seen any problem from Bernoulli distribution. What we get very often is a binomial distribution. Okay, so instead of Bernoulli, we will go to something which is asked again and again, and it is a binomial random variable. So what is a binomial random variable? Suppose
सब yeah. Oh, nothing, sir. Nothing. Okay. You want to go ahead and tell everyone what is binomial random variable? Sir, like there are two possible outcomes. That's why we need that. Good. One And event we term as success and the other one as a failure. another. It is just like a Bernoulli trial. Like मैंने एक पासा फेंका, दो आउटकम है, one is success, one is failure. It is exactly like this, but instead of एक पासा फेंकने के या एक बार पासा फेंकने के, instead of one throw, there are n throws. So basically, out of n events, what is probability of X success if probability of one success is P. So basically what will happen? Suppose करो मैंने ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने 5 थ्रोज किए, मेरे पास चाहे 5 पासे थे या मैंने एक ही पासे को 5 बार फेंका, एक ही बात है. What is the probability that I'll get 2 sixes and 3 non-sixes? Okay, is it clear? Is it Yes, clear? sir. What is the probability of getting X success out of n events if probability of one success in one event is P? This is the problem statement. So what will happen? Suppose I write, these are my 5 throws. I have to get 2 sixes and 3 non-sixes. Suppose I get 6, 6, not 6, not 6, not 6. You know what is 6 bar? 6 bar is not getting a 6. So what is the probability? 1 by 6 into 1 by 6 into 5 by 6 into 5 by 6 into 5 by 6. Why I am multiplying these 5 numbers? Anyone? So because they are mutually exclusive events. Yeah, because they are independent events. They are not mutually exclusive events. Yes, sir. Yes, sir. Mutually Independent. exclusive means अगर पहली बार 6 आ गया तो दूसरी बार 6 नहीं आ सकता. यहाँ they are independent events. What I am getting in the first row has nothing to do with what I am getting in the second row. And that has nothing to do with what I am getting in third, fourth, or fifth row. So probability of getting a 6 in first event is 1 by 6, 1 by 6 in second, 5 by 6, 5 by 6 of not getting 6 in third, fourth, and fifth event. So the probability of getting first 2 6 and last 3 non-6s 1 by 6 square into 5 by 6 cube. Is it okay? Is it okay? Yes. This is just one way of getting 2 6s. Another way of getting 2 6s is I get 6 on first and third occasion and not 6 on second, fourth, and fifth occasion. And the probability will be 1 by 6 into 5 by 6 into 1 by 6 into 1 by 6, sorry, into 5 by 6 into 5 by 6, which will be again 1 by 6 square into 5 by 6 case cube, similar like that. And how many such events are possible? That will be equal to 5C2. Why 5C2? Anyone? So because we have to select out of those 5. Good. Yes, If I have to select which 2 out of 5 are going to get 6, number of ways is 5C2. Therefore, my probability is 5C2 into 1 by 6 square into 5 by 6 cube. Okay? 5C2 ways of deciding which 2 throws are going to get a 6. टोटल 5C2 तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि कहां पे 6 रखना है, कहां पे नॉट 6 रखना है. और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि इन 2 जगहों पे 6 रखना है, इन 3 जगहों पे नॉट 6 रखना है, तो उसको करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 का स्क्वायर इंटू 5 by 6 का क्यूब.
therefore probability of getting 2 सक्सेस इन 5 थ्रोज, हम इस तरीके से लिखेंगे P2, 5 का मतलब क्या हुआ, probability of getting 2 सक्सेस इन 5 थ्रोज। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार किताबों में लोग इसको P5, 2 लिख लेते हैं, कई बार 2, 5 लिख लेते हैं, P P n, x और x, n, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है। जो बड़ा वाला नंबर होगा वो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज होंगे और छोटा वाला नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम को जनरलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, अगर 5 थ्रो की जगह इफ वी हैव डन n throws or if there were n event and I have to get x successes, so number of ways of deciding which positions will be successful is ncx, and probability of x successes p to the power of x, and probability of remaining n minus x failure is 1 minus p raised to the power of n minus x. Therefore probability of getting x success is ncx p to the power of x 1 minus p to the power of n minus. Is it okay? Yes, sir. Now if I have to find expected value of x, it will be simply pi xi. Now what happens, a long derivation, and we don't need to learn the derivation as such. It will be simply n into p, which is obviously intuitive. क्या हो रहा है, अगर मान लो मेरे पास एक पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है और मुझे आता कुछ नहीं है और मैं आंख बंद करके तुक्के मारूं और नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे? अगर 4 में से एक करेक्ट है तो एनीवन? 25। ठीक है, तो 25 का नंबर कैसे आया कि 100 में से अगर ऑन एन एवरेज मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो मेरे 25 नंबर आ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इसको डिराइव नहीं करते, इसको डायरेक्टली इंट्यूटिवली दिखाई दे जाता है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वेरिएंस ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू np1 माइनस p हो जाएगी। इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि बर्नौली का वेरिएंस p इंटू 1 माइनस p था। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं तो बाइनोमियल बर्नौली हो गया, तो वहां से याद हो जाता है कि जैसा बर्नौली का था वैसे ही वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा np इंटू 1। ठीक है, पक्का? यस सर। गुड। तो जैसे मान लो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने 5 थ्रोस किए, बल्कि 5 को बड़ा करके, अगर सपोज करो मैंने 60 थ्रो किए, तो 60 थ्रो में 60 इंटू 1/6 ऑन एन एवरेज मेरे पास 10 सिक्सेस होंगे। ठीक है, 10 बार ऐसा होगा जब मेरे 6 होंगे ऑन एन एवरेज। जो मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा वो 60 इंटू 1/6 इंटू 5/6 हो जाएगा, जो कि 50/6 हो जाएगा, और जो मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 50। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें सर जी सर सर एक छोटा सा डाउट था सर। बोलो। सर बर्नौली में हमेशा एक सिंगल इवेंट इन्वॉल्व होगा, है ना, और बाइनोमियल में मल्टीपल इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे? नहीं, मल्टीपल इवेंट्स में सिंगल भी हो सकता है, मतलब अगर समझ रहे हो, लाइक बर्नौली इज एन स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल। ओके सर, ओके। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू 1 रखने से कोई मुझे रोक नहीं सकता ना। यस सर। ठीक है, जैसे 1 इज एन इंटीजर बट 1 इज आल्सो अ रैशनल नंबर एंड 1 इज आल्सो अ रियल नंबर, तो उस तरह की बात है, सुपरसेट सबसेट वाली बात है। ठीक है जी सर। गुड, बट इस डेफिनेशन वाली बात, इससे ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो
नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 heads in 5 rows। अब यहां पर क्या हुआ, जब मोर देन 1 हेड की बात कर रहे हैं तो सॉरी मोर देन 4 हेड की बात कर रहे हैं तो मेरे 2 केस बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 5 rows एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स इन 5 rows। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बिकॉज 4 से ज्यादा हेड आने के जो तरीके हैं उनमें क्या हो जाएगा, या तो 4 हेड आएंगे या तो 5 हेड आएंगे। ठीक है, These two events are mutually exclusive even now, and so we नाउ add. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं हो सकता। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जो सेट की प्रॉपर्टी होती थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैं 5 सिक्के उछा लूं और उसमें 4 हेड भी आ जाए और 5 हेड भी आ जाए, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए सिंपली प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। इसलिए यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5c4 इंटू p टू द पावर ऑफ 4 1 माइनस p टू द पावर ऑफ 1। p की पावर 4 मैंने इसे लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरा सिक्का अनबायस्ड हो। ओके जी, Sir, the question is probability of getting more than 4. So we will include Yeah. 4. ओह सॉरी सॉरी मेरी गलती, आई एम सो सॉरी। मोर देन मीन सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर रहा था मैं, बोलने में गलती हुई। तो इसमें 4 भी आ जाएगा और फिर 5c5 p टू द पावर ऑफ 5 ये वाला केस हो जाएगा। तो इस So it तरीके is the से condition of at least four hits. अगर एट लीस्ट 4 हेड्स होता तो वही बात हो गई, ठीक है ना। एट लीस्ट 4 हेड इज सेम थिंग व्हिच इज बेसिकली x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये एक ही बात हो गई। ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली थिंग थोड़ा सा बता दो। वाली थिंग। तो बेसिक आइडिया क्या है कि सेट थ्योरी में, oops I'm so sorry, there's a power failure over here, so in दिख रहा है दिख रहा है। तो सेट थ्योरी में एक बात होती है, अगर एक सेट A होता है दूसरा सेट B होता है, so number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। ऐसी बातें करते थे, याद है? ये बहुत ही छोटी क्लास में, 11th क्लास में जब सेट पढ़ते थे तो ये बात करते थे। डू यू रिमेंबर इट? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, तो सेम यही लॉजिक प्रोबेबिलिटी पे भी लागू हो जाता है, व्हिच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यस सर। अब क्या है, तो नॉर्मली मैं यूनियन की प्रोबेबिलिटी को पीए प्लस पीबी नॉर्मली नहीं लिख सकता, बिकॉज साथ में मुझे इस इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस देयर इज नो इंटरसेक्शन, देन दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टॉसिंग 5 coins, A is getting 4 heads and B is getting 5 heads। अब ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, या तो 4 हेड आएंगे या फिर 5 हेड आएंगे, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे वो सिंपली 4 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 हेड की प्रोबेबिलिटी होता है। इज इट ओके? यस सर। गुड। So one more thing, if it is telling at least 4, we will include P55 also. If the word is at least 4 heads. At least means 4 or more than 4? At least means 4 and more than 4, or Yeah. If till it 4 was only. at most 4,
if it was at most 4, then it was P05 plus P15 plus P25 plus P45, all the cases. Okay? Okay, sir. Got it. But instead of doing such a long calculation, it is easier to do 1 minus P55, because मैं 1 2 3 4 और शायद मैं बीच में मिस कर गया P3,5 और तो अब 6, अगर मेरे पास 5 फ्लो हैं तो देयर आर 6 आउटकम। 6 में से 5 चीजें ऐड करने से अच्छा है कि टोटल में से एक चीज सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके? Yes, sir. So it means if it is saying at least, we will include 4 and 5, but at most we will add all the. At most means 0 1 2 3 4, Oh, okay, sir. not more than 4. क्या? तो ये जो प्रॉब्लम हो गई, इस प्रॉब्लम का जो हमारा डायरेक्ट यूज है वो रैंडम वॉक प्रॉब्लम पे। You know what random walk problem is? Anyone? Yes, sir. So let me put something over here. ये मेरी नंबर लाइन है। इनिशियली हम लोग x = 0 पे हैं। Every step we can go +1 with probability p, or we may remain where we are after. We can go -1 with a probability 1 minus p. Okay? Is it okay? Yes, sir. एक ड्रंकर्ड है जो कि किसी जगह पर खड़ा था and he started moving either left or right with some probability p and 1 minus p. Now the question is, what is the probability of n comma m, or basically what is the probability, sorry, let me write it completely. What is the probability of x = m in n steps? ठीक है? Is it okay? Yes, sir. तो क्या? Can you repeat this statement? Can you just repeat this statement? Yes, sure. एक ड्रंकर्ड है या एक पार्टिकल है, वो x इनिशियली x = 0 पे खड़ा था। Initially it was at x = 0. Now it can take +1 or -1 step with some probability p and 1 minus p. Any problem? Any problem? Okay. 2/3 is the probability that he will go to the right hand side. 1/3 is the probability he will go to the left hand side. 4/5 is the probability that he will go to the right hand side. 1/5 is the probability that he will go to the left hand side. Okay? Okay? Now I'm asking, what is the probability that it will, so don't talk about x = m and x = n. I'm asking, what is the probability that it will be at x = 2 in 4 steps? So let's do it in a, instead of doing in terms of variable, let's do it in terms of the number. 4 स्टेप चलने हैं और उसको यहां पर पहुंच जाना है। ये x फाइनल है। ठीक है? तो हम लोग बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड लेना है। अभी मुझे पता नहीं है कि पहले 3 फॉरवर्ड लिए देन 1 बैकवर्ड, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, देखिए नंबर ऑफ केसेस, फॉरवर्ड 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 बैकवर्ड, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये 4 तरह के केसेस बने, है ना?
इज इट ओके? एक, दो, तीन, चार, वहां पहुंच गया। x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप एंड देन अ बैकवर्ड स्टेप। फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है। कैन यू हियर मी? यस सर। फिर x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, 1, 2, 3, 4, फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है। फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है। यस और बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 2 है। Yes, sir. ये चार तरीके हो गए जिस तरीके से वो x इज इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ठीक है। यस इस हर तरीके की प्रोबेबिलिटी p क्यूब इंटू 1 माइनस p हो गई, बिकॉज ये चार फॉरवर्ड स्टेप चलनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी p इंटू p, सॉरी तीन फॉरवर्ड स्टेप चलने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी p इंटू p इंटू p, और एक बैकवर्ड स्टेप चलना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस। ओके, पक्का? यस सर। और ऐसे इसकी भी p क्यूब इंटू 1 माइनस p, इसकी भी p क्यूब इंटू 1 माइनस p, and this one is also p cube into 1 minus p. Therefore my answer is 4 into p cube into 1 minus p. यहां तक कोई गड़बड़? No. अब इसको क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ getting to x is equal to 2 in 4 steps, I want to get to x is equal to m in n steps. यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो मैंने कहा सपोज ए फॉरवर्ड स्टेप्स थे और बी बैकवर्ड स्टेप्स थे। जैसे यहां पे मैंने कहा कि मेरे 3 फॉरवर्ड एक बैकवर्ड था, मैंने कहा इन जनरल 3 फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड की जगह पर ए फॉरवर्ड और बी बैकवर्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो a प्लस बी की वैल्यू n हो जाएगी, बिकॉज टोटल स्टेप तो n है। यस सर। Yes, और sir. a माइनस बी की वैल्यू m हो जाएगी, बिकॉज वो a स्टेप आगे गया, b स्टेप पीछे आया, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो जो टोटल फॉरवर्ड स्टेप हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, वो n प्लस m बाई 2 हो जाएगा, और बैकवर्ड स्टेप हो जाएंगे n माइनस m बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? Sir, sir, A plus B, इन दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी में b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू n प्लस m, तो a की वैल्यू n प्लस m बाई 2 हो गई। okay, sir. और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू n माइनस m, इसलिए b की वैल्यू n माइनस m बाई 2। इफ यू लुक एट इट, 3 is 4 plus 2 by 2 and 1 is 4 minus 2 by 2. Is it okay? Is it okay? बोलो हाँ Yes, sir. या ना। यस ठीक। अभी क्या हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, n और m दोनों को इवन होना है या n और m दोनों को ऑड होना है।
कोई मुझसे कहे कि 4 स्टेप में x इज इक्वल टू 3 पे जाकर के दिखाओ, तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 4 स्टेप में x इज इक्वल टू 3 पे जाने के लिए मुझे 4 + 3/2 3.5 फॉरवर्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और 1.5 बैकवर्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, और स्टेप तो 3.5 हो नहीं सकते। तो बेसिकली if number of steps is even, then my final position is also even. Also even. If number of steps is odd, then my final position is also odd. Okay, so I can write, let me write it over here. Probability of getting x is equal to m in n steps is equal to 0 if n is even, m is odd. This is equal to 0 if n is odd, m is even. यहां तक कोई दिक्कत? 7 स्टेप में x is equal to 2 पे नहीं पहुंच सकते, 4 स्टेप में x is equal to 1 पे नहीं पहुंच सकते, x is equal to -1 पे भी नहीं पहुंच सकते। Is it okay? Yes, sir. अभी अब अगर n और m both are even और n and m both are odd, 8 स्टेप में x is equal to -2 पे पहुंच सकते हैं, 7 स्टेप में x is equal to +3 पे पहुंच सकते हैं। My probability will be equal to NC A p to the power of a 1 minus p to the power of b, बिकॉज मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास n इवेंट्स हैं जिसमें से मुझे a बार फॉरवर्ड जाना है और b बार फॉरवर्ड नहीं जाना है, लाइक a सक्सेसेस एंड b फेलियर्स। इज इट ओके? Yes, sir. तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी NC n plus m by 2 p to the power of n plus m by 2 1 minus p to the power of n minus m by 2. Please write this formula. So if someone asks me what is the probability that x is equal to 2 in 8 steps, I will clearly see मेरे 5 फॉरवर्ड स्टेप हैं और 3 बैकवर्ड स्टेप हैं, and therefore probability is 8c5 p to the power of 5 1 minus p to the power of 3. Is it okay? Yes, sir. And probability of x is equal to -3 in 7 steps. इसका मतलब क्या हुआ? 7 plus -3/2. We have 2 forward steps and 7 minus -3, which is 10/2. 5 backward step, so it will be 7c2 p to the power of 2 1 minus p to the power of 5. Okay? Any problem with this? So, sir, here I just want to know one thing, that if n is even, then m should also be even. That is what I am saying. If n is Okay. even, m is odd, then probability is 0. Even 0. Obviously तुम मुझसे सवाल ये पूछ सकते हो कि सर 10 स्टेप में x is equal to 3 पे जाने की क्या probability है, इसमें क्या दिक्कत है? तो तुम्हारा मन है जो चाहो क्वेश्चन पूछो, तो you can ask whatever question you want. But if it is not possible, then I will say that the probability is 0. So probability of getting x is equal to 3 in 10 steps is 0. There is no way you can reach x is equal to 3 in 10 steps. Okay, sir. Is it fine? Yes, sir, I got it, sir. Sir, 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 hello, sir. Yeah. Sir, in 8c5, that thing NC n plus m by 2, that n plus m by 2 denotes the forward step, na? And the Yeah. forward step is 3. Forward steps
then n plus m by 2 is a, which is forward steps, Okay, and okay. and So, n minus m by 2 is backward steps. so, Yeah. so we have applied this formula that n plus 1 m by 2 here. So, sir, how it is It would be 7c? sir 8C3P 8C3 and 8C5 are same. The 8C3P Yeah, Oh, 85 and P- 83 are the same number. but But- it would be sir P means 1 minus P power 5 and P cube, I think, if I don't make any mistake. No, look at it. I want x is equal to 2 Yes. in 8 steps. So my n is 8 and m is 2. Okay. 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 So how I will go from x is equal to 0 to x is equal to 2 in 8 step? I'll go 1, 2, 3, 4, 5. 5 forward steps, and then 6, 7, 8. 3 backward steps. Okay. Okay, now got it, sir. So 5 forward, therefore p to the power of 5. 3 backward, therefore 1 minus p to the power of 3. Okay. So, Yep. so for the second case, so I'm confused with In that second case, balance I want to be at, okay, give me a minute. I want to be at x is equal to minus 3 in 7 steps. Okay. So my n is 7 and m is minus 3. Is it okay? Okay, so it was minus 3. Yeah, So it is minus 3. It is I minus was 3. taking it So, as so a is equal to 7 minus 3 by 2 to b is equal to 7 minus 3 by 2, which is basically 5. Therefore, 1, 2 step forward, and then 1, 2, 3, 4, 5. 5 step backward. I am at x is equal to minus 3. Okay. yes, sir. Good. Good. Finally, I will go with the last discrete random variable, which is Poisson. Poisson. Okay. Okay. So it says Px is equal to lambda to the power of x upon x factorial e to the power of minus lambda, where x is equal to 0, 1, 2 up to infinity. Is it okay? Yes, sir. It is still a discrete Yes, sir. variable, but instead of going from, let's say Bernoulli was, you have only two values, x is equal to 0, x is equal to 1. In binomial, we can have n values of, rather n plus 1 values of x, 0, 1, 2, 3, 4 up to n. Here it can have infinitely many values. Okay. Yes, sir. If you look at this series, sigma px, x is equal to 0 to infinity, will be equal to e to the power of minus lambda is common, sigma lambda to the power of x upon x factorial, which is e to the power of minus lambda, 1 upon 0 factorial plus lambda upon 1 factorial plus lambda square by 2 factorial plus lambda cube by 3 factorial, so on and so forth, which is basically e to the power of lambda, and therefore it is 1, which should be the case because probabilities of all possible outcomes should add up to 1. Okay. Any problem? No, sir. Good. Now, if we want, we can derive it, but there's no need for it. So what we will do,
expected value of x is equal to lambda. So if I want to multiply this thing with x and do a summation, we can do some kind of a mathematics. Let's not get into detail of that. Expected value of x is lambda, and variance of x, which is basically expected value of x square minus expected value of x whole square, is also lambda. Okay, Yes, sir. and therefore standard deviation is root lambda. We can do any number of problems, but since we are about to finish a class, I'll just pick up one of it. So basically, I am standing at a bus stop. Okay, and on an average 20 bus come to this stop in my direction per hour. What is the number? 20 buses per hour. And the question is, what is the probability that, number one, no bus will come in, give me a number. 2 hours. Okay, that's a huge number. Obviously, if there are 20 buses are coming in an hour, the probability of getting no bus in 2 hours will be very large. So no bus will come in 5 minutes. Another question is, what is the probability that 2 buses will come in maybe 30 minutes? Okay, these are the 2 questions that I want to answer. Good. Is it okay? Yes, sir. Question is clear? Yes, sir. I'm standing at a bus stop. मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हूं. On an average 1 घंटे में 10 बस आती हैं. सॉरी, 1 घंटे में 20 बस आती हैं. क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 मिनट में एक भी बस नहीं आएगी? जो पहला स्टेप यहां पर है वो है हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा. कोई बताएगा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? Sir, 5/3. गुड, क्या बात है. ठीक है. सो ऑन एन एवरेज 60 मिनट में 20 बस आती हैं, तो 5 मिनट में 20/60 into 5/3 बसेस आनी चाहिए थी. ऑन एन एवरेज 5 मिनट्स में 5/3 बसेस आनी चाहिए थी. लेकिन मैं चाह रहा हूं probability of x is equal to 0, which will be equal to lambda to the power of 0 upon 0 factorial into e to the power of minus lambda. So my answer will be equal to e to the power of minus 5/3. Is it okay? So in buses 5/3, it's a fraction. हाँ, it can always be fraction. तुम्हें 5 मिनट ले लिया तो क्या करें? तुमने 6 मिनट लिया होता तो मेरी 2 बस आती on an average. Oh, है okay. ना? sir. But on an average तो 5/3 हो ही सकता ना? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? जैसे कोई पूछे कि भाई ऑन एन एवरेज मेरे घर में कितने गेस्ट आते हैं, तो हो सकता है महीने में 100 गेस्ट आए, 30 दिन थे, तो मैं कहूंगा भाई 10/3 गेस्ट आते हैं, which is nothing wrong with that. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. so nothing wrong with the average being 5/3. ठीक है. तो क्या हुआ, जैसे ही आपको पता चला कि 20 बसेस आती हैं 1 घंटे में, आप निकालो 5 मिनट में कितनी बस आनी चाहिए थी ऑन एन एवरेज. वो जो नंबर है वो मेरा लैम्डा हो गया, बिकॉज दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. और अगर x की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल दो. नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 है, तो पहले मैं सवाल पूछूंगा भाई 30 मिनट में. क्वेश्चन
what is the probability that 2 buses will come in 30 minutes? तो अगर एक घंटे में 20 बसेस आती हैं तो 30 मिनट्स में 10 20 by 60 into 30 which is 10 बसेस आएंगी। तो मेरा लैम्डा कितना गया 10। अब x is equal to 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 10 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ऑफ -10। ठीक है, यस सर। इस तरीके से हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल कर सकते हैं। ठीक, एंड सर हाँ जी, सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हम 1 माइनस नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि कोई भी बस ना आने की प्रोबेबिलिटी। अरे बाप रे बाप, 1 माइनस करने में तो 1 माइनस बहुत ढेर सारे, 1 माइनस एक बस आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 माइनस 2 बस आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 माइनस 3 बस आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे देखोगे तो बड़ा मुश्किल है। ये जो फॉर्मूला है ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज अगर तुम्हारी 5/3 बस आने वाली थी तो 0 बस आने की प्रोबेबिलिटी है 5/3 टू द पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू e टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, यस ठीक है, सर। हाँ जी, सर इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये पॉइजन का ही प्रॉब्लम है, हमेशा एक एवरेज वैल्यू के ही इर्द गिर्द घूमेगा ना, या और भी कोई मेथड? तो क्या कहते हैं, पहली बात तो क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, यानी कि 5 मिनट में 2.3 बसेस नहीं आ सकती हैं। ठीक है, ओके सर, यस और सर। दूसरी बात ये होगी कि इन जनरल एक्स इनफाइनाइट जा सकता है। अब ऑब्वियसली इनफाइनाइट बसेस तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज घंटे में 20 बस आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 की 30 नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, 50 नहीं हो सकती, 200 नहीं हो सकती, 500 नहीं हो सकती। ठीक है, सो इट्स टेक्निकली इनफाइनाइट। एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन आज की क्लास ऑलरेडी इतनी डिटेल्ड हो चुकी है, मैं बता नहीं रहा हूं। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज नंबर से पॉइजन को अप्रोच करते हैं, पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बेसिकली सपोज करो क्या कहते हैं, मैंने 500 कॉइन उछाले, ठीक है, यस सर। और मैं तुमसे पूछता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे 10 हेड आएंगे। ठीक है, तो अब कौन वहां पर बैठ करके 500 C10 की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी की 100 हेड आएंगे। तो वहां पर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर लेते हैं बाइनोमियल को, जो कि दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर देते हैं। तो ऑब्वियसली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, binomial is a different distribution, but n tending to infinity or for large n the results are more or less same। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आज इसको तुमने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाह रहा। ठीक है, तो अभी इस बात को भूल जाते हैं, अगली क्लास में करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इस तरह की प्रॉब्लम होगी जहां पर एक तो ऑन एन एवरेज की पहली बात तो क्या, जो भी चीज जो मेरा रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट होगा। एज ऑफ नाउ जो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़े हैं उसमें या तो 0 या 1 होगा, तो वो बर्नौली वाला केस होगा। 0 से n होगा तो बाइनोमियल वाला केस होगा। यहाँ पर बसेस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये नहीं कि ऑन एन एवरेज 20 बस आती है तो 21 नहीं आ सकती। तो इस तरह के प्रॉब्लम में फिर हम लोग पॉइजन लगाए। ठीक है, यस सर। सर एक कंफ्यूजन है, हाँ सर एक कंफ्यूजन है, जैसे सर हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि नो बस यानी कोई भी बस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है बस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक ये है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अरे भाई, मतलब एक एक नेगेटिव random हमको शो कर रहा है, variable एक पॉजिटिव शो कर रहा है। सुन लो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने 50 सिक्के उछाले और उसमें 0 हेड आए, तो इस प्रॉब्लम में, इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं वो तो पॉसिबल है। 50 सिक्के उछालो, हो सकता है एक भी हेड ना आए। और मैं पूछूं 50 सिक्के उछाले उसमें 2 हेड आए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बस स्टॉप जिसपे मैं खड़ा हुआ हूं उसपे ऑन एन एवरेज 20 बस आती है, एक अलग बात है घंटे में, और 5 मिनट में ऑन एन एवरेज 5/3 आनी चाहिए, एक अलग बात है। लेकिन हो सकता है 5/3 की जगह 0 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए,
और वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आएगा वो कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ओके ओके सर। गुड, चलो अभी क्लास को खत्म करते हैं। विल मीट और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ये जो छोटी सी मैं बात कर रहा था वो करेंगे, और फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको पिकअप करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.